Hello friends, first of all happy Students Day to all my dear students, because today is 15th October. 15th October is celebrated as Student Day. So once again happy Student Day to all my dear students. So friends, we are discussing here taxonomical aids. We already discussed taxonomical aids like herbarium or herbaria plural. We already discussed botanical gardens and zoological parks. Now today we'll discuss the next taxonomical aids, that is museums. Taxonomical aids किस लिए यूज किए जाते हैं? Taxonomical aids are used to study large number of organisms at a glance. कम समय में हमको अगर बहुत if we have to study large number of organisms in a short time, then we'll use these taxonomical aids. ठीक है? Now today we'll discuss about museums. Now museum क्या है? Museums are the places where collection of preserved plants and animals are kept. Museums are the places where collection of preserved plants and animals are kept. म्यूजियम ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमन्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने किसी म्यूजियम को अगर विजिट किया होगा तो क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में वहाँ स्पेसिमन्स रखे हुए आपने देखे होंगे, या आपकी जो लैब होगी कॉलेज या स्कूल लैब, उसमें भी क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में स्पेसिमन्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पेसिमन ऑफ पर्टिकुलर बर्ड. ये बर्ड तो यहाँ जो मैं बर्ड्स दिखा रहा हूँ, ये बर्ड्स एक्चुअली डेड है. दिस इज एक्चुअली डेड बर्ड. ठीक है ना, ये बर्ड्स की डेड बॉडी है. फिर ये कैसे हमको लाइव दिख रही है? तो इसमें इस डेड बॉडी में क्या भरा है? एक मिक्सचर भरा है. दिस बॉडीज आर प्रिजर्व बाय विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग. उसमें स्टफिंग किया जाता है. जो जनरली लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ एंड देन प्रिजर्व. आर स्टफ करना मतलब उसमें उसकी बॉडी कट करके उसमें कुछ मिक्सचर भरा जाता है, देन उनको प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है ना. जनरली लार्जर बर्ड्स एंड एनिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टफ एंड देन प्रिजर्व. दे प्रिजर्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन. Specimens preserved in formalin. Formalin is a 10 to 40% solution of formaldehyde. Formalin is a 10 to 40% solution. 10 to 40% solution of formaldehyde. Formalin क्या है? 10 to 40% solution है किसका? formaldehyde का. Formalin is a solution of 10 to 40% formaldehyde. 10 to 40% solution of formaldehyde. So specimens are generally preserved in formalin, which is a 10 to 40% solution of chemical substance formaldehyde. ठीक है ना. यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट एनिमल्स आर स्टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टफ एंड देन प्रिजर्व. ठीक है ना. सो म्यूजियम भी एक ऐसी जगह है जिसको हम विजिट करके जान सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. ये हम म्यूजियम विजिट करके कम समय में जान सकते हैं. ठीक है ना. सो म्यूजियम इज ऑल्सो an important taxonomical aid. ठीक है. Now taxidermy is a science in which larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. The science which deals with study of stuffing and preservation of large animals
is called taxidermy. What is taxidermy? Taxidermy is a science in which larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. The science which deals with study of stuffing and preservation of large animals is called taxidermy. So this is all about museums. Okay. Now we'll discuss next taxonomical aid, that is key. Next taxonomical aid is key or taxonomic key. Now this key has analytical nature. Means generally keys are used for analysis or for identification or classification of animals. Keys are generally used for identification or classification of plants and animals. Now what is key? Key is a scheme or method which is used for identification or classification of plants and animals. What is key? The scheme or method which is used for identification of plants and animals. The scheme or method which is used for identification of plants and animals is called key. कि एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किसी भी अननोन प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन को. ठीक है ना. नाउ हाउ दिस मेथड वर्क, विल स्टडी हाउ दिस मेथड वर्क, कि कैसे किसी भी अननोन स्पेसिस का आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की. नाउ की में क्या होता है? ऑल कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज. कीज आर ऑफ two types. Keys are of two types. First is indented or yoke key.